अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं जब ICAP आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इकोनॉमिस्ट से ज़्यादा मेरी दोस्ती जो है वो आप लोगों से है। अब्दुल्ला साहब हैज़ बीन लाइक अ मेंटोर, तोला साहब के साथ इतना काम किया, शबर भाई के साथ इतना काम किया, भट्ट साहब के साथ इतना काम किया, अभी जो लाहौर से दोस्त बात कर रहे थे। सो आई एम रियली रियली ग्लैड टू बी हियर एंड आई थिंक कि जितना आपका इन्फ्लुएंस है इकोनॉमी पे इस वक्त, शायद हम इकोनॉमिस्ट्स का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। आप बहुत ऑपरेशनल लोग हैं, आप बिजनेस को भी देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट साइड जो टैक्सेशन की है उसको भी देखते हैं। सो इट्स आई एम रियली रियली ग्लैड टू बी हियर। आई एम इट्स एन ऑनर फॉर मी और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। सो व्हाट आई वांट टू डू टुडे, ये आप कर रहे हैं। So what I want to do today is कि हम एक intuitive view लेते हैं कि what is our intuitive view on the economy, and then we'll try and do a good diagnostic, so हम समझ सकें कि हम खड़े कहाँ पर हैं, और उसके बाद हम ये देख सकें कि ये जो हमारा लव अफेयर है IMF के साथ, ये कहाँ खड़ा है। मुझे शर्फ हासिल है कि पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम जो हमने कंप्लीट किया, पहली बात ये कहता चलूं कि ये झूठ है कि पाकिस्तान ने 22 या 23 प्रोग्राम किए हैं। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक प्रोग्राम किया है जो 13-16 का प्रोग्राम था। डार साहब ही वजीर खजाना थे, मैं उनके दाएं तरफ बैठा करता था, सो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। और ये काम हम जाके किया करते थे पार्क हाइट दुबई में। पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम एंटर जरूर किए, बट वी नेवर एवर कंप्लीटेड एनी अदर प्रोग्राम बट द वन वी डिड इन 13-16। सो अगर हमने रिफॉर्म पाथ IMF का भी लेना होता तो वो भी हमने कंप्लीट नहीं किया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कीप इन माइंड एज वी फ्रेम वेयर वी आर टुडे। अब आगे आ जाएं। अब फिर यह है कि अगर IMF कर भी लेते तो क्या हम वाकई उस जगह पर होते जहां पर आज खड़े हैं, या कोई फंडामेंटल रीसेट है जो हमें करना है। एंड आई टेक यू थ्रू व्हाट आई थिंक इज द फंडामेंटल रीसेट पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर। सो सबसे पहले देखें, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान के जो जितने भी मसाइल हैं वो स्ट्रक्चरल इन नेचर हैं। हमने उनको रेमेडी करने की कोशिश की है, पार्टली थ्रू प्राइसिंग चेंजेस जो हम IMF के साथ करते हैं, और पार्टली हमने अपनी जो टैक्सेशन का भी प्रोसेस है वो भी इसी तरह चलाया, जिस पे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। बट हमने कभी भी अपनी जो क्रॉनिक और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको हल करने की कोशिश नहीं की। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फिस्कल डेफिसिट और ये जो सारी चीजें हैं, ये प्रॉक्सिमेट कॉजेज हैं जो आपको दिखाई देते हैं, पर इसके नीचे बहुत कुछ हो रहा है जो हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट क्या है पाकिस्तान का, जो आज भी हम कर सकते हैं, जो बाकी ममालिक ने भी किया। एक चीज जो मेरे लिए डिफाइनिंग रही है जिंदगी में वो ये है कि व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया डूइंग अ PhD, जो ऑस्ट्रेलिया के सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर बने, I was very enamored that he had been head of school at the University of New South Wales in economic history. In June 2022, Australia again appointed a guy as secretary to the PM who had been a distinguished professor and a vice chancellor. In 1991, when India was in trouble, India appointed Dr. Manmohan Singh, one of the greatest economists, as the finance minister. And he got a team together of people like Dr. Montek, Aluwalia, and that is where the change started. For me, the defining point is between the countries who are wealthy, 50 years in the making, and between the countries who are not wealthy, the competence of the team at the treasurer. I mean, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। ये आप ईस्ट एशियन मिरेकल भी देख लें तो आपको ये चीज दिखाई देगी। So that's always been my starting point. अब ये जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है आपका, ये हमारी एक सिस्टमैटिक क्रिएशन है। जैसे कि टैक्स पे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, सो इट्स नॉट कि ये खुद ही बन गया है। आई थिंक दिस इज आवर क्रिएशन, एंड आई विल शो यू how that creation took place. But where we stand today is that if I ask you what is the en vogue document today, you will say it is MEFP. It is the Memorandum of Economic and Financial Policies that the IMF makes. So your thinking process has been outsourced. And honestly, what we have done is कि हमने जो professionals in public policy है, उसको almost has gone missing. The kind of decay I see in professionals not being in ministries like Ministry of Energy or my parent ministry in the Q block where I've served, I think that is the defining factor that between Pakistan and the other two countries that I will keep mentioning, because one it's next doors and one where I've served. So the nervous system, the thinking system is outsourced and broken. And that is the repair that we have to do.
सो अगर आप देखें तो पाकिस्तान को की रिपेयर शुरू कहाँ से होनी चाहिए? वो यहाँ से होनी चाहिए कि आप ये रियलाइज करें कि पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है, वो अगर आप ये फिगर्स देखें तो इसमें सिर्फ दो चीजें नोटिस करें। एक तो कितनी सिक्लिकलिटी है और दूसरा एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है। कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो सकती अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे। और दूसरी चीज जिसकी हम बहुत बात करते हैं कि करंट अकाउंट का खसारा, तो आपको एक क्लियर कॉरिलेशन दिखाई देगी कि जब भी पाकिस्तान का फिस्कल बढ़ता है तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट भी बढ़ता है। This is the best lesson that we have to understand if we have to move forward. Because budget has just been served and we need to talk about it. मुझे बहुत खुशी है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ जिन्होंने कराची से बात की। मैं कल कामरान खान के वो जो करते हैं दूसरा शो, वहां पे था, तो मैंने कहा कि मुझे टैक्स पे बात करने का बहुत एडवांटेज है। अब्दुल्ला साहब जानते हैं कि वो क्यों है। मैंने कहा कि मेरी एक बेगम है, वो टैक्स को बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान में समझती है, इंटरनेशनल। तो उसने कहा आपकी एक ही बेगम है, अच्छा किया कि आपने क्लैरिफाई कर दिया। तो दैट ऑन अ लाइटर नोट, बट today the reform, as he said from Karachi, is the expenditure side reform. It is not the dominant reform. The tax is not the dominant reform today, and I'll tell you why. As Aftab was rightly saying, आप 7,303 अरब इस दफा एक्सपेंडिचर करेंगे इंटरेस्ट में, which is $25 billion. Net federal receipts 6,887. You will borrow 416 billion rupees and pay the markup. If today all the funding was to be stopped, you cannot pay pensions, you cannot pay defense, you cannot pay PSDP, you cannot pay a subsidy, you cannot pay a grant. Everything else is borrowed. That is how much your expenditure side is disturbed today. And it is very repairable. That's the good part. It's repairable easier than the tax reform. And I will show you how. So अगर हम आगे चलें तो आप स्टेट फंडेड पेंशन, मैं क्यू ब्लॉक में था तो मैंने उस दिन एक मीटिंग में कहा, आज से 6 साल पहले, मैंने कहा 250 बिलियन इन पेंशन्स है, ये 500 हो जाएगा 5-6 साल में। आई वाज रॉन्ग, ये 761 बिलियन हो गया फेडरल का। 17 सब्जेक्ट्स हैं, आपने तय किया 18वीं तरमीम के अंडर एनएफसी करने से कि हम इनको प्रोविंसेस को दे देंगे। That was your call and a good call to make. डिस्ट्रिक्ट को भी जाना चाहिए नीचे। That's अभी भी ये सारे सब्जेक्ट्स फेडरल में मौजूद हैं। इसका मैं आपको फिगर दूंगा, बट बाद में दूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट रहे और हम कोई भी सोए ना। Because you will enjoy the presentation. I do this for a passion, and that's the only reason I do this. जनरल सब्सिडी देंगे 1074 की, ये सारी बट साहब के पास सेक्टर को जाएगी, बाकी सब सेक्टर्स को छोड़ दें। उसका रिफॉर्म हम करने की भरपूर कोशिश करते रहे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हर गवर्नमेंट ने कैसे अटेम्प्ट किया, पर खड़े कहाँ हैं आज। पीएसडीपी के 1700 प्रोजेक्ट्स हैं, 16 साल का थ्रो फॉरवर्ड है, अभी शायद 300 हमने नए ऐड किए हैं। जैसे मैंने शुरू की थी गुफ्तगू कि इकोनॉमी जहां पे है ये हमारा कॉन्स्ट्रक्ट है, ये खुद नहीं यहाँ पे आई। फेडरल गवर्नमेंट का साइज है 43 डिवीजन, 400 अटैच डिपार्टमेंट्स, 6.5 लाख लोग। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में 5,20,000 लोग हैं। रेगुलेटरी सिस्टम की 122 एजेंसीज हैं। आपकी कॉल है ये, डेवोल्यूशन के बाद भी आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। योर एक्सपेंडिचर साइड इज मोर डिस्टर्ब्ड देन योर टैक्सेशन साइड। 52% इस दफा का एक्सपेंडिचर इज हायर in the budget today than it was in the budget last time. अगर मैं interest payment निकाल भी दूं तो you are still doing 28% higher. That's not a good sign today. We should be thinking that if everything is borrowed, we should have probably brought this down. And many heads could have been brought down probably. That's my take. I think the fund will come back to you with that. I will keep referring to the fund. पुराना प्रोग्राम क्योंकि मैंने सारा देखा था, करंट प्रोग्राम भी डॉक्टर शेख को जब रिसीव किया था और साइन किया था तो मैं उस 2-3 लोगों के कमरे में मौजूद था जब हमने वो करने की कोशिश की। Conventional response may not suffice this time. I think that's our take home from this understanding. ये
नईम ने बड़ी अच्छी बात की, इज अ डियर फ्रेंड, मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 8.2% 2000 की में 8.69% आप करेंगे अगले साल, नॉट दिस ईयर, अगले साल पूरा मिला लें तो 8-9-10% पे खड़े हुए हैं। I mean, you guys know better that this should not have been here. Why should it not be here? Not just because we want to take it somewhere. In the NFC, you wrote that you will take it to 15%. Because you didn't take it to 15%, आपका जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है वो ब्रोकन है। So we've talked about the fiscal. There is a big quasi-fiscal. I love PIA. I don't want to sell it. Many attempts, there are so many anecdotal things I can tell you. We were going to the IMF mission and, PIA was on the cards. This government, PMLN, was wanting to move with it. Zubair Saab, me, Dr. Vakar, Finance Secretary, we were traveling. 2-3 deaths ho gayi thi Stargate pe, jo Karachi ka hai, and we had to pull back. ये losses हैं PIA के, I don't need to comment. आपके सामने खड़े हैं. I do a lot of work before I put this together. ये है आपका circular debt 100, मेरा ख्याल है 500 जब PMLN ने टेक ओवर किया, PTI ने छोड़ा 2400, currently 2600. That's your past sector story. We can talk about the rest of the stories. SOE losses, one thing I keep saying, and I keep saying that I'm one of those people who had a very good experience working with governments. I did what I wanted to. No one ever stopped me. A lot of people have a different sense. So I started writing this book. In 2014, I wrote the book, and I put in for the first time that this is the loss of the SOEs that they are suffering. It has increased over the years. जो हमारी सारी SOEs put together हैं वो ये नुकसान करती हैं। ये किताबें फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे पढ़ी हैं, सब में मैंने उसका प्रेफेस भी लिखा हुआ है। They're really worth reading, and that's where we stand. So अभी तक मैंने बात की है सरकार की. So we've understood कि सरकार के मैक्रो का जो रिपेयर है, that's inevitable. Whether we do it today or whether we do it 5 years from today, maybe I'll come 5 years again and then we'll have a discussion. You will remember these figures. What is happening in the industry, right? We were at 13.2% of GDP on exports. We are somewhere at 8% today. If we were to make the 13% today, our exports would be $48 billion. पाकिस्तान के बहुत से मसाइल शायद हल हो जाएंगे. That's the crux. ये हम क्यों नहीं कर पा रहे? Because ये सबसे important number है. जिन दोस्तों की हम मिसाल देते हैं और सही देते हैं, चाइना, मैंने इतना गवर्नमेंट में रह के डील किया, ट्रू फ्रेंड 35% है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी. इसका मतलब ये है, और यहाँ मैं आतिफ मियाँ को कोट कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने बड़ी अच्छी बात की. उसने कहा यार बात तो ये ना कि हम एक सीड लगाते हैं क्योंकि हम हैं 13% पे, तो दूसरे 3 सीड लगाते हैं उस फॉर्म में बिकॉज वो 35% कर रहे हैं, तो उतनी ही पैदावार पैदा होगी. It's really that simple. You've actually gone down from 18 to 13.6. I think India is even at 35%. The East Asian miracle is the miracle of 30 to 35%. So PBC published some very good figures, and I just want you to remember these figures, right? We are an agri society. My favorite one is this: 566,2032 tons per hectare. Kilograms per hectare of cotton. That's the difference in yield. Very good data. Wheat, 310. So you are somewhere between 30 to 60% of what the world is doing. Look at what the upswing is. Look at what the possibility is there. You spend $10 billion in importing agriculture and food related products. So mashallah, great scope there. If we were to pick agriculture as the #1 thing to correct in the next election cycle, Pakistan would certainly look different. And it's my first go-to reform that I would do if Pakistan में अगर कभी मौका मिले. इंडिया में देखिए कि 2004 में बेल्स कंपेरेबल मैंने करके आपको दिखाया है. अब आप देखिए कि आप कहाँ खड़े हुए हैं. These numbers tell you the story. There is no story without facts. These are absolute facts that we are
seeing. अब जो सबसे बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री का है वो ये है कि हम भूल जाते हैं कि 5.2 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पाकिस्तान में टोटल 52 लाख हैं, उनमें से 99% जो हैं वो एसएमईज हैं। ठीक, अब मजे की सब बात यह है कि 52 लाख में से मतलब 1.5 लाख एसएमई बोरोअर्स हैं। सो यू रियली नीड टू थिंक कि व्हाट इज गॉन रॉन्ग विद योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम खवातीन की तो बहुत बात करते हैं और करनी भी चाहिए, बट सी दैट स्टोरी, यू डिड टफ at 1% and you see the numbers here. This is your real story, right? बाकी हालांकि उनका शेयर अच्छा है, contribution to GDP अच्छा है, but you know their access to resources, the clusters, the regulatory environment, these are serious issues that need to be handled. That's your story of industrial change. That's your story of agriculture change. And we will talk a little bit more. That's a story that I keep saying with a lot of humility. It was 2.7% growth. Now the number that is quoted is 3.6%. So I want to shock you that that means कि 90 लाख बच्चे पैदा होंगे अगले साल में. Shocking. 55 लाख थे. With that figure, you will go to 9 million. If that figure is correct. ये जो figure है, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। अगर मैं लाइन दिखाऊं आपको अपने साथ वाले ममालिक की, बांग्लादेश की और इंडिया की, इज गोइंग डाउन टू 1%। हम अपना बेहतरीन दोस्त चाइना को समझते हैं, यू नो द पॉलिसी। इफ दिस ड्रेन्स द रिसोर्सेज, यू कैन पुट द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट पीपल अराउंड, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। एंड जैसे पहले बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो स्टेट ने करना है लोगों के साथ, कि इसको कैसे संभालना है हमने। इसमें एक और नंबर इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं भूल गया, एंड दैट इज कि 63% ऑफ पाकिस्तानीज आर लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज। आपने इनको हैंडल करना है। दैट्स a figure that should be at the back of my mind if as a policy maker I am trying to sort something out in Pakistan. So ye aapko, we are done with the diagnostic part of Pakistan. We've looked at all the things. Now we are going to start looking at what is our love affair with IMF. Our love affair with IMF is when we run out of foreign exchange reserves, we run to the fund. ये trajectory है आपके foreign exchange reserves की, जो मैंने आपको पेश करने की कोशिश की है। यहाँ पे खड़े हैं 3.9 बिलियन पे, आई थिंक सितंबर 2021 में 20 अरब डॉलर पे खड़े थे। ये है वो प्रोग्राम जब आप 13 में खड़े थे तो आपने प्रोग्राम लिया। ये है वो प्रोग्राम जब आप 19 में खड़े थे। Look at the variability that is coming in the foreign exchange reserves of Pakistan. This alone will not allow you to have macroeconomic stability. So we need to smoothen this out, right? Everything else becomes secondary. This is terribly important. And whenever we have dropped, and today we have dropped, and you're looking to IMF again. This is your IMF story, right? So this is the only program you did. I'm going to humbly say a few things about it, having been part of that core team to run this. And you know, now working with other countries also, I see this. If you don't have an astute management on the recipient side of the country, completing a program is a very, very difficult thing. It's not an easy thing. So there are 3 levels of handling an IMF program. The technical level, where smart folks from the IMF with 11 PhDs arrive, each expert in their own arena, fiscal, structural, technical, and I fondly remember those discussions. And then you have a policy discussion with the departments behind them, fiscal affairs division, who are assisting them. Then you can talk about economic diplomacy, and I can talk about it, how that is done. I don't need to mince my words. How is it done? We have a director there. He was an Iranian chap, I remember. We used to approach him, and we should. There were many things that used to come, and we used to answer them at the director level. And then you have friends. We all know who our friends are. You approach them. So this is the 3-tier process. But you must complete the first tier.
You must believe that you've completed the first year. IMF must believe that you've completed the first year. ठीक? डिजाइन ऑफ प्रोग्राम भी उसी से बनती है. कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स हमेशा गरीब आदमी पे भारी पड़ेगी. जब भी प्राइसेस एडजस्ट होंगी तो मोस्ट ऑफ अस कॉस्ट ऑफ लिविंग का शायद 30% होएगा. फ्रॉम द लेस फॉर्चुनेट वंस वो 80% होएगा, वो उन पे ज्यादा पड़ेंगी. This is the take home, even if we were to complete an IMF program, right? This is not a sufficient condition for prosperity. It is a necessary condition, because standing at $3.9 billion, having to pay $2.3 billion immediately to China and others, and having to collect $16 billion in the upcoming year. 16 is the net amount, I'm telling you, right? But it's still not a sufficient condition for Pakistan's prosperity. But it is a necessary condition to meet what I have just explained to you. What's my take? How do we move? Ninth review, agar ho jayega, I pray, I hope that it should happen. Because abhi ek electoral cycle hai, usme 15 August ko agar change aata hai, it will become very difficult. I've been with caretaker setups. It will become hard to handle that time, you know. So, and new program इसलिए चाहिए कि आपको ये रकम चाहिए है जो मैंने आपके सामने रखी है. अगर आप ये 10 और 6 जो हैं, without going into detail, ये चाहिए है. ये मेरी प्रेजेंटेशन में 14-18 महीने से पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहा हूँ. ये जो आपने देखा है डेट रीप्रोफाइलिंग, मैं बहुत सी बात कर रहा हूँ. मुझे बड़ी खुशी है कि अथॉरिटीज ने भी डेट रीप्रोफाइलिंग की पाकिस्तान की बात की है. अगर पहले की होती तो 7303 जो है, जो भट्ट साहब भी मुझे अभी पहले मेंशन कर रहे थे, वो शायद हम हैंडल कर जाते हैं. और वो हैंडल तो आपको करना पड़ेगा, वरना 416 अरब बोरो करेंगे, मार्कअप देंगे, एवरीथिंग एल्स इज बोरोड. दैट्स द सेवेरिटी ऑफ द चैलेंज पाकिस्तान इज फेसिंग. बहुत से लोग प्लान बी पूछते हैं. इससे पहले सवाल हो, मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ, कई दफा किया है. You know, friendly countries, you go to them, we ask, have asked, you ask again. Curtailment of the import bill. The government is already doing so, right? The government is curtailing the import bill. The reason government is curtailing the import bill, Tola Saab has arrived, so I'm going to, in his honor, wait for 1 minute. I know the. So the plan B before, as I said, anyone else? The government is already working on that plan. It's obvious. Go to the friendly countries, you curtail your imports from 6, we are down to around 4. You increase your rates of returns on the RDAs, for example. So you pick up all these monies and you sail through. But you can only drift through with this money till you run into another IMF program. And why do I say that? There is an international architecture. जो भी मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आता है, जैसे कि आपका मुल्क इस वक्त है, तो वो वहीं पे मीट होता है. एक आईसीयू का डॉक्टर है, वो आईएमएफ ही है, पर वो आपको इस मुश्किल से निकाल सकता है, एक ब्रीदर फराम कर सकता है. एंड दैट्स व्हाई यू गो टू देम. ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, आप मेंबर भी हैं उनके, सो इसी में आपको रहना चाहिए. अब ये है कि इसको अगर जिसने भी पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम हैंडल करना है, ये स्लाइड जो है उसको याद कर लेना चाहिए एट द टेक्निकल लेवल. इट इज नंबर 1, दे टॉक टू यू अबाउट बैलेंसिंग योर बजट. जो अभी बजट प्रेजेंट हुआ, मैंने आपकी एक्सपेंडिचर साइड पे एक कमेंट किया उस पे, और आई थिंक कि थोड़ा सा रद्दोबदल अगर आप करेंगे उसमें, तो शायद आईएमएफ ऑन बोर्ड आ जाएगा, पर आपको कुछ रद्दोबदल करना पड़ेगा. मैं चूंकि इंटरनेशनली भी ऑपरेट करता हूँ, तो आई एम वेल अवेयर ऑफ द नाइसिटीज ऑन बोथ साइड्स. एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब एक एक्सेप्टेड रिफॉर्म है दुनिया भर में, ठीक है, वो आपको रखना पड़ेगा. आप यकीन रखेंगे, इतनी एक्सचेंज रेट पे बात होती है, आई एम गोइंग टू कमेंट. आई यूजुअली, मैंने जब जिंदगी का पहले इंटरव्यू किया तो मैं बड़ा घबरा रहा था उस पर कमेंट करते हुए, बट नाउ आई विल कमेंट. हियर्स द कमेंट. इट डजंट मैटर व्हाट योर एक्सचेंज रेट इज. एक्सचेंज रेट आपकी पैदावारी सलाहियत है
वर्सेस वियतनाम और यूएस और इंडिया और विच एवर कंट्री, आप उसको बेहतर कर लें, आप दुनिया में कोई चीजें बेचने के काबिल हो जाएं, वो ठीक हो जाएगा। इसका इतना ही है। शॉर्ट रन में जरूर है कि अब्दुल्ला अंकल अगर बहुत बड़े बायर बन के मार्केट में आ जाते हैं और वो शॉर्ट रन में ये चीजें क्रिएट करते हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट डिटरमिन्स योर, it is your productivity versus the productivity of any other country which determines the exchange rate. You know, हमें exchange rate के बारे में इस तरह सोचना चाहिए। फिर रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस 21 ही रखा होगा आज स्टेट बैंक ने, मैंने चेक नहीं किया, बट आई डोंट थिंक कि उनको तब्दील करने की जरूरत है। आई थिंक वी आर देयर। कोर इन्फ्लेशन 20 और 26 है, उनको देखे, वी आर देयर। कोर के प्लस रहना चाहिए, कोर से नीचे नहीं आना चाहिए। IMF विल कम ऑन बोर्ड। डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं सबको सरकार में कहता हूं कि एक नया G20 का फ्रेमवर्क है, उसको पढ़िए। इसलिए $6 अरब की इंसिस्टेंस हो रही है। सब जानते हैं ना $6 अरब क्या चीज है, आई डोंट नीड टू रिपीट। वो कह रहे हैं 6, हम कह रहे हैं 4। वो एक सस्टेनेबल, अब सब जब से ये डिफॉल्ट्स हुए हैं, जैसे श्रीलंका का हुआ, IMF has become very careful with every country. My wife's just advising Sri Lanka on these affairs, and I was just talking to her, and that is exactly the same situation they are facing. So it's not much different. I don't think कि हमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट वहां पे मिल रहा है। टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, देखिए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी रखें, हम जो गैस देते हैं उनको उस पर भी सब्सिडी रखें, TDS को हम खत्म करके बेनजीर इनकम में ना लेके जाएं। ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। छोड़ें IMF को, मैं ये चाहता हूं कि सब कुछ खत्म कर दें। पाकिस्तान शुड बी मूविंग ऑन टू अ टारगेटेड सब्सिडी रिजीम। फ्लैगशिप प्रोग्राम है पाकिस्तान का BISP, हर हुकूमत को क्रेडिट दीजिए। 20 या 30 अरब पे PPP छोड़ के गई, जब डार साहब ने छोड़ा 120 या 130 था, और अभी 300 और अब 450। सो टेक एवरीथिंग देयर, गेट रिड ऑफ एवरीथिंग एल्स, एंड IMF would be really happy, I would be really happy. You know why? आपको पता है कि 2, 2.5, 4 रुपए की जब बिजली देते हैं गरीबों को, तो वो शायद रिकग्नाइज भी नहीं करते। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो रिन्यूअल है वो तब शुरू होगा जब वो रियलाइज करेंगे कि आपने ये पैसे उनको दिए हैं और उनके घर आए हैं और उनको एजुकेशन खरीदनी है, बिजली खरीदनी है, वो खरीदें। आज तो वो सोचते हैं 4 रुपए की बिजली है हमारे लिए, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहता है कि आप मुझे क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, और वो फिर क्यू ब्लॉक भागते। गेट आउट ऑफ दिस बिजनेस। सो अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो सारे डूबल काम है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, यू नो, सॉरी। फिर आपके क्वाज़ी फिस्कल डेफिसिट्स हमने देखे हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा। लिबरलाइजिंग ट्रेड, ये, सो दिस इज हाउ यू विल आई थिंक कास्ट द IMF, इवन द न्यू प्रोग्राम विल बी अराउंड दीज थिंग्स। पर ये याद रखिए कि पाकिस्तान का जो फंडामेंटल रीसेट है, सो आई एम कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, व्हिच इज के फिर ठीक कैसे करना है ये सब कुछ अगर यहाँ पे खड़े हैं। तो देखिए, फंडामेंटल रीसेट जो है वहीं से शुरू होगा, कि जो मैंने आपको शुरू में कहा था, कि जो मैंने सारे ममालिक में देखा है, कि पाकिस्तान को आपको इंडक्ट करनी पड़ेगी स्मार्ट पीपल, वेदर इट्स प्राइवेटाइजेशन, BOI, क्यू ब्लॉक, एनर्जी। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। अगर ऑस्ट्रेलिया अपना सेक्रेटरी टू PM जो है वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ला सकता है, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपने क्या करना है, और करना इन्हीं पॉलिटिशियंस ने है, जो भी हुकूमत होगी। अब आप आगे चलिए, ये वर्ड याद कर लें कि पॉलिसी इज नथिंग एल्स बट HR इज पॉलिसी। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखेंगे तो इट्स HR which is policy. That HR will maximize my shareholder return, and I as the owner or the state citizen is the that shareholder. मेंटल रीसेट क्या है? मैं थोड़ा सा वक्त ज्यादा लूंगा, बट दिस विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है, अब मैं सब मेरे दोस्तों ने कहा जरा खुल के बात कीजिएगा, कि एक सड़क बनवानी हो तो कोरिया को कहते हैं, बस चलवानी हो तो कोरिया को कहते हैं, पोर्ट बनवाना हो तो एक और दोस्त को कहते हैं, बस चलानी हो तो टर्की को कहते हैं। जरा सोचिए, ऐसे कभी भी मुल्क नहीं चलते। मुल्क तब चलेंगे जिस दिन आप ये बिलीव करेंगे कि ये जो वो जो टेक ऑफ का फ्रेज है ना, मैंने इसलिए रिपीट कर दिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई तो वायरिंग है ना, टेक ऑफ होता है और फिर जहाज नीचे। सो डिजाइन ये 13 दफा हुआ है पिछले 3-4 दिहाइयों में। डिजाइन ये है कि हम स्टिमुलाई देते हैं, फिजिकल भी देते हैं, मॉनेटरी भी देते हैं, टर्फ का दें आसानी से समझाने के लिए, और फिर वो नीचे आ जाता है। बिकॉज वायर्ड इकोनॉमी इस तरह से कि प्लांट खरीदना है कहीं से, उसका तेल खरीदना है कहीं और से,
LNG खरीदनी है कहीं और से, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बिजली की बात की और बिजली ने कहा should I go on or I should stop? Okay. जी ठीक है। ओके, सो हमें कंट्री की जो याद करना है सबको कि इट इज ओनली अबाउट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, जहां से ग्रोथ आती है, ना ये रेमिटेंसेस से आती है, ना ही बाहर से चीजें खरीदने से आती है। अब ये है कि मैक्रो स्टेबिलिटी पहले कैसे आएगी। मैक्रो स्टेबिलिटी ऐसे आएगी कि आप बिलीव करें कि जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं उसका करंट एक्सपेंडिचर 328 अरब रुपया है। It's not your business to run those. It is the business of the provinces to run those. Please let that go. If you want to correct your budget, and it can be corrected, this budget can show a different picture. 315 आप उसका PSDP पे दे रहे हैं, HEC भी आप सोचिए आपने चलाना है कि नहीं चलाना। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट बनाएंगे तो जो आपका 404 अरब की आपको पैसे बचेंगे। बिस्क की कॉस्ट शेयरिंग शुरू कीजिए, आपको दिखाई देना शुरू कर जाएगा कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है वो हमें करना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन्स करनी चाहिए। अगर ये सारी साइड आप करेक्ट करें, प्लस थोड़ा सा डेट रीप्रोफाइलिंग में जाएं, तो आपको जवाब मिलेगा कि एक्सपेंडिचर साइड कैसे बजट की संभाली जा सकती है। ये आपके सामने है। ये फिगर्स मैं कहाँ से ला रहा हूँ, मैं कोई भी चीज तहकीक के बगैर नहीं लाता। एक PFM रिपोर्ट है पाकिस्तान पे अभी आई है, वर्ल्ड बैंक और मेरे ख्याल है मिनिस्ट्री ने मिलकर की है, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे मौजूद है, ये वहां से आ रहे हैं सारे फिगर। उसके बाद जो एक्शंस हमारे करने के हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि एनर्जी सेक्टर को डिसरप्ट किए बगैर पाकिस्तान जो है वो नहीं चल सकता। इसलिए कि हमने देखा क्या आपका ख्याल है PMLN की ये कोशिश थी कि सर्कुलर डेट बढ़ जाए, PPP की ये कोशिश थी या PTI की? नहीं हो सकता। एक बंदे की तब्दीली मुमकिन नहीं होती, ये हुकूमतों का कसूर नहीं है, ये सेटअप ही ऐसा है आर्किटेक्चर का। मिसाल देता हूं, ना मैं, ना तोला साहब, ना मेरा ड्राइवर कभी कंप्लेन करते हैं कि मेरे मोबाइल का बिल का बड़ा मसला है, बट हम तीनों शायद कंप्लेन करते हैं कि बिजली चली जाती है, और उसके कौन चला रहा है, कौन सा सेक्टर, दैट शुड जस्ट क्लैरिफाइड। ठीक, री रेगुलेशन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये फिगर तो हर सूरत में आपको तब्दील करना पड़ेगा। टैरिफ एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी और जो एंटी बायस है आपका ट्रेड पॉलिसी में, पुट अ टीम टुगेदर, लेट देम डू दिस, और ये किया जा सकता है। दूसरा ये है कि आपको अपने जो फिजिकल इंसेंटिव्स है ना उनको भी दुरुस्त करना पड़े। अगर मैं एक प्लॉट खरीदने जाऊं तो जो मेरा KYC होता है, कंपेयर टू मैं बैंक अकाउंट खोलने जाऊं या स्टॉक मार्केट में जाऊं, तो आप हैरान होंगे कि मतलब मैं अपना KYC नहीं पूरा कर सकता। बट कोरोना की, सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, राइट? आर एलीट, उनको हमने इस ओपियम ऑफ रियल एस्टेट पे लगा दिया है। वी हैव टू मेक देम वेरी प्रोडक्टिव। एलीट सारी दुनिया में होते हैं, so let's stop badgering the elite, but tell the elite to do something else. That's the state की job, that's the government की job. बस लास्ट चीज मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छा कदम है हुकूमत का कि उन्होंने एग्रीकल्चर को नंबर 1 रखा है। मैं इस पे आई वांट टू से द बेस्ट थिंग अबाउट द बजट, एंड दैट इज दैट दे हैव सीरियसली टेकन इट, एंड यही पाकिस्तान के जो टर्न अराउंड है उसको शुरू कर पाएगा। थैंक यू सो मच।